Okay, everybody's ready now? Should we start? Should we start? Yes, sir. Now, up till now, what we have done on spherical triangle, that if we know three sides, we know three sides, we can get any angle between them. Okay. Or we know two sides included angle, we can get the third side. Okay. If the spherical triangle is right angle spherical triangle, or it's a quadrantal spherical triangle, when one of the side is 90 degrees, we can use Napier's rule and solve Napier's formula, and we can get that. We are going to use this formula to solve the great circle problems. Before we proceed for solving the great circle problem, we will just refresh our memory pertaining the great circle. Okay, pertaining the great circle. Okay, first and foremost thing, great circle is the shortest distance on the Earth's surface between two positions. Okay, that's good. This is Earth's surface. Okay, this is equator. Any point, 2 points we take. This is great circle is shortest. Any point we take, great circle is the shortest distance. Okay, and you know great circle, between 2 points, you can draw only one great circle until unless they are antipodal, just like your North Pole and South Pole, where you can draw innumerable. Okay, one points are here. You can draw innumerable great circles. Sorry, you can draw innumerable great circles. Okay, innumerable. Until they are antipodal. Otherwise, between 2 points, we can draw only one great circle. Okay. You also know the great circle divides the sphere into two halves. Okay. So actually it passes through the center of the Earth. Okay. Now another important thing. Rhumb line cuts all the meridian at the same angle. Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. But great circle cuts all the meridian at different angle. Okay? At different angle. Why? Because meridians are not parallel to each other. Okay. And the course changes slight. Like suppose this is Earth. Okay. This is equator. Okay. This is your great circle. Suppose this is great circle. Great circle. Okay. These are the meridians. These are the meridians. These are the meridians. Sorry. This is a great circle. Okay. This angle will be different, that angle will change, this angle will be different, this angle will be different, this angle will change. Okay. This will cut at different, slightly, it will change. Okay. A great circle is a shorter distance on Earth's surface between two positions. It cuts meridian at different angles. These angles are different. Okay. Now see, course changes slightly. Okay. If you lay the great circle on mnemonic chart, that will be a straight line. Okay. Now a great circle intersects the equator at 2 points, 180 degrees apart. Now example, the best example is, you see celestial sphere, equinoctial is equator, equinoctial is a great circle, and you have ecliptic as a great circle. Okay. Ecliptic, I think suppose this is your equinoctial. Okay. Equinoctial. And this is your ecliptic. Okay. So two places.
any great circle intersects other great circle at 2 points 180 degrees apart. Equator is a great circle. So any great circle intersects, remember, any great circle intersects the equator at 2 points. How many degrees apart? 180 degrees apart. 180 degrees apart. Okay. Any question on this? Okay. Now, very important thing. Suppose this is the meridian. Pole, north pole, south. What is the course? This is the meridian. Let's take this is the meridian. The meridian. Okay. What is the course here at the equator? This is the course. Yes or no? This is the meridian. Yes, meridian, this is the course. Okay. When you come here, this is the course. Then this is the course. Okay. Now what happens? Course, when the course changes, let me draw this way. Sorry. Suppose this is the equator. Okay. This is a great circle which is cutting here. Okay. This will be the course. Okay. This is the course. Now course, as the latitude increases, as the great circle latitude increases, the north-south component decreases on the great circle track. The north-south component, as the latitude increases, the north-south component decreases till it reaches the vertex. Okay, vertex, the highest point reached by the great circle. Okay. So this is your course. Suppose this is 45, 46, 47, like that. When it comes to the vertex, the course becomes east-west. This is vertex. Okay. Vertex, the course becomes east-west. So great circle, this is meridian, course will start increasing as it goes. So 45, 46, 47, 48, 49. When it comes to vertex, it becomes either 090 or east-west. Okay, and this vertex is located equidistant at 2 points where the great circle intersect the equator. So how many degrees from the point where it intersects the equator? A great circle intersects how many degrees? D long. As I said, a great circle intersects the equator at 2 points. सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है सर। सर लगता है नेटवर्क समझ नहीं आ रहा है वीडियो बहुत अटक रही है सर। क्या हो गया? सर आपकी सर आवाज बहुत ज्यादा लैग कर रहा है बीच में। Okay, let me go to special. Okay, how's it now? How's it now? Can you hear me? नहीं सर, अभी भी अटक के आ रहा है। हाँ जी सर एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए क्लास में वापस से, उससे हो जाता है। अभी भी अटक रहा है सर। Okay, can you hear me now? Yes sir. Okay.
ठीक है. So what did I say? That a great circle, when two great circle intersect, they intersect at 2 points 180 degrees apart. Okay, equator is a great circle. So any great circle which intersects the equator will intersect at 2 points 180 degrees apart. Okay, मान लो great circle है, and this will this is your Earth sphere. This is equator, which is a great circle. Okay, it will equator. Now, suppose a great circle, इसको मैं dot dot कर. A great circle intersects the equator at 2 points. यहाँ जाएगा. Okay, intersects at 2 points. These are 2 points. Okay, at which. Okay, now another thing, as I said, the great circle cuts the meridian at different angle as it progresses. Now, suppose this is a meridian. This is okay. What is the angle? This is the angle when it's cutting the equator. Okay. As you progress, as you proceed northward or southward, as the latitude increases, the north-south component of a great circle decreases, and the east-west component of great circle, course what we are stating, the north-south component will decrease, and east-west component till it reaches the highest point, vertex. Okay, vertex. Vertex is the highest point, highest latitude a great circle reaches. Okay, highest reach of a great circle, vertex. Where the great circle course will become east-west, the north-south component will finish. Thereafter, again as you progress, the north-south component will increase till you come back to the when the north-south component is maximum. Okay. Then the important thing, whatever the angle here made by the great circle, whatever the angle made by the great circle with reference to equator is the latitude of the vertex. What is vertex? Vertex is the highest point, highest latitude reached by the great circle. Okay. Whatever angle at which the great circle cuts the equator, that will be the latitude of the vertex of that great circle. Now, example, okay, on the celestial sphere, equator is a great circle, equinoctial is a great circle. Okay, at what angle does it cut equinoctial cuts? Ecliptic cuts the equinoctial. 23.5 degrees. 23.5. What is the maximum declination reached by the sun? 23 degree, 26.7 minutes. Exactly. So when it is on 21st of June or on 22nd of December, when the max sun is at the vertex of the ecliptics, that is the maximum declination. That is likewise on the Earth. If angle at whatever angle you are cutting this, the great circle is cutting the equator. This same will be the latitude of the vertex. In the other words, suppose this is the course of the course when crossing the equator, that will be the collat of the vertex. मान लो आपका कोर्स है 55 डिग्री, आपका कोलैट होगा 55 डिग्री. ओके, आपका एंगल है 55 डिग्री कोलैट है, तो दिस विल बी अबाउट 35 डिग्री. So your latitude of the vertex will be 35 degrees. Okay. Now remember, between this point at which it cuts the equator and the other point where the great circle is cutting the equator, they are 180 degrees apart.
and vertex is located midway between them. Midway between them. That is 90 degrees apart from the points the great circle cuts the equator. Okay. So there are two vertices. There are two vertices of a great circle. 180 degrees apart. This point and this point are 180 degrees apart. And they are 90 degrees from each point on the equator where the great circle cuts the equator. Is that clear? Any question on this? Any question on this? Yes. Yes. Question? Any question? सर एक वर्टेक्स बताया आपने, सेकंड चीज क्या थी वो? There are two vertices. दो वर्टेक्स, two vertices मतलब दो वर्टेक्स हैं, ठीक है? नहीं सर, एक तो वर्टेक्स बताया आपने, एक और चीज बताई ना? और क्या बताया? कोलेट। हाँ हाँ, कोलैट ना, अच्छा कोलैट, कोलैट भाई 90 माइनस लैटिट्यूड कोलैट। सर एक बार वर्टेक्स फिर से बता देंगे सर, नहीं समझ आया। नहीं, मैं फिर से आ रहा हूँ, I'm coming back to that. Till you are confident, मैं आगे नहीं करूँगा। Okay. First thing, again, let me repeat again. Between any 2 points, there can be only one great circle that can be drawn, until unless they are antipolar. Okay? Between any 2 points, there only one great circle that can be drawn. Okay? That is the shortest distance. Okay? तो मैं लिख देता हूँ, आप इसको लिखिए। मैं फिर से repeat again so that आपको confusion ना हो। Okay. First, a great circle is the shortest distance दिखाई दे रहा? एक मिनट, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक हाँ great सर, circle विजिबल। is short on the Earth's surface. Between 2 points. Okay. And as we said, there's only one great circle that can be drawn between the 2 points in there. Okay. It cuts the meridian at different angles. Take it. Why? Because meridians are not parallel to each other. Rhumb line cuts all the meridian at the same angle. Okay. Contrary to that, the great circle cuts all the meridian at different angles. Okay. Now course changes very slightly. The course will change very slightly. Okay. But suppose you lay this on the mnemonic chart, which we'll discuss when you are doing Mercator saving, तो उसमें mnemonic chart भी discuss किया होगा. So when you lay this on the Mercator, it will be a straight line. But on the Mercator chart, they are different. Okay. The great circle, the GC, intersects equator at 2 points, 180 degrees apart. Now see, understand, when two great circles they intersect, we know the great circle divides the sphere into
two equal halves, hemispheres. So any great circle will divide it in. When two great circles, they intersect, okay, they intersect at 2 points which are 180 degrees apart. Equator is a great circle. Equator is a great circle. Any other great circle intersect, it will intersect at 2 points which are 180 degrees apart. Now, and again, okay, so vertex is the highest latitude reached by a great circle. Okay, vertex is the highest latitude as it progresses. But लिख लो, फिर then again I'll come back to it. Okay. Point लिख लो, उसके बाद फिर मैं ऊपर है. There are two vertices of a great circle. There are two vertices of a great circle. वर्टेक्स इज द हाईएस्ट लैटिट्यूड, इसके बाद से हाँ, बाय ए ग्रेट सर्कल. मैं वो फिगर में एक बार से ड्रॉ कर बता दूंगा कैसे होता है वर्टेक्स. ओके, ठीक है. वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट, भाई यो पहले लिख लो, पॉइंट से लिखो. ओके, नाउ ये भी लिख लीजिए, एंगल एट विच ए जीसी intersects equator. Angle at which the GC intersect the equator will be equal to the latitude of vertex. ठीक है. जिस एंगल में, मैं फिगर से बताऊंगा आपको, तो whatever angle it intersects, that will be the latitude of the vertex. And I give an example. You consider equinoctial and the ecliptic. Ecliptic cuts the equinoctial at 23.5 degrees. The maximum declination, that is vertex, when the sun reaches the vertex, at what time? 21st of June or 22nd of December. What is the declination? That is the latitude of the sun, geographical position. The declination 23.5 degrees. Likewise, any great circle, it cuts at 45 degree angle. Latitude of vertex will be 45 degree. It cuts at 20 degree angle. Latitude of vertex will be 20 degree. Okay? 20 degree north, 20 degree south. There are two vertices. Is that clear? Any question? मैं फिगर पे आता हूँ. फिगर पे ये लिख लिया आप लोगों ने? एक मिनट सर, बस लास्ट. लास्ट में क्या लिखा है? The angle at which a great circle intersects equator. Angle at which a great circle GC intersects the equator. Angle will be equal to the latitude of the vertex. Whatever angle it intersects, that will be the latitude of the vertex. 30 degree vertex. That is the highest point the great circle will reach. It cuts at 50 degrees. 50 degrees will be the point maximum highest latitude that great circle. 50 degree north, 50 degrees south. Okay. That means the course you are making, the course is measured from the meridian. Course is measured from the meridian. Angle, what we are talking about, from the equator. The course what you are making will be colat. Colat is 90 minus latitude. Is the colat. Will be the colat of the vertex. Okay. The course, when you are in the course at which you are making while crossing the equator. Course you are making while crossing the equator will be the colat of the vertex. What is colat? 90 minus latitude of the vertex. Is that clear?
इज दैट क्लियर? जवाब दीजिए ना। तो कंफ्यूजिंग हो रहा है बहुत। क्या हो रहा है? कंफ्यूजिंग हो रहा है सर, नहीं, वर्टेक्स पहले और आपने लिख इसका। लिया, ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया कि नहीं? पहले लिख लिया हाँ आपने? जी सर, ये लिख लिया पूरा का पूरा। नाउ कमिंग बैक टू द फिगर, कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। ओके, दिस इज अर्थ, the equator is a great circle. यस सर। Okay, now suppose this is another great circle. मान लो ये पॉइंट है, ये great circle है। Okay, this is a point where it is cutting the whatever this angle, ये मेरिडियन है, सॉरी, ये आपकी मेरिडियन यहाँ से पार है, एक मेरिडियन यहाँ जा रही है, एक मेरिडियन यहाँ जा रही है, एक मेरिडियन यहाँ। ग्रेट सर्कल कौन सा है? लेट मी टेक अनदर पेन। ये ग्रेट सर्कल, ओके, ये ग्रेट सर्कल, ये ब्लू वाला, ठीक है। दिस इज व्हाट डिड आई से, एनी ग्रेट सर्कल इंटरसेक्ट्स द इक्वेटर एट 2 पॉइंट्स 180 डिग्री पर, एक यहाँ एक ऊपरली साइड में, ऑन द ऑपोजिट साइड, ओके, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट, सपोज दिस द हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद ये आपका यहाँ से ऐसे जाएगा, नीचे आएगा। मान लो ये आपका ग्रेट सर्कल है, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है। ये ग्रेट सर्कल कट करेगा एट ए पॉइंट हियर अगेन, ओके, इट विल कट ए पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ग्रेट सर्कल विल कट एट ए पॉइंट, ऐसे आकर के ऐसे कट करेगा। कितने, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है? यस और नो? इट इज कटिंग एट 2 पॉइंट्स और नॉट? यस सर। दे आर 180 डिग्री, ठीक है। ओके, इट इज रीचिंग अ हाईएस्ट पॉइंट यहाँ, द लैटिट्यूड, मैक्सिमम लैटिट्यूड रीच बाय ग्रेट सर्कल कॉल्ड वर्टेक्स। इज दैट क्लियर? पर बट जरूरी तो नहीं है कि ग्रेट सर्कल इससे पास ही हो इक्वेटर से। क्या हो गया? नो सर, ठीक है। नहीं, क्या हो गया बताइए फिर मैं। ओके, नाउ पे अटेंशन, इट एंगल चेंजेस, भाई यहाँ जो कोर्स है, ये कोर्स है, इट विल चेंज, विल नॉट। रंब लाइन में क्या है? इट रिमेन्स सेम with the meridian, cuts the meridian same angle. Great circle नहीं, great cut circle cuts at different angle. Now as it, see, latitude increases, the east-west component increases and north-south component decreases. Okay, मान लो ये 45 डिग्री पे यहाँ when it is cutting the equator, when it is cutting the equator, this is the course we are making. ये course बना रहा है. Okay, 46 हो, 47, 48, 49, 50 and so on. North-south component will start decreasing till it reaches the highest point here, vertex, when the course becomes east-west. When the course becomes east-west, okay. अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, the course becomes east-west. ये इक्वेटर है, ओके। सपोज देयर इज अ ग्रेट सर्किल, यहाँ से लेते हैं, जो ऐसे जा रहा है, कट कर रहा है ये एंगल, ये जहाज है ऐसे गोइंग, ग्रेट सर्किल गोज, मैक्सिमम पॉइंट पहुंचेगा कहाँ? 100 वर्टेक्स पे, एंड देन इट विल कम डाउन लाइक दिस। These 2 points are 180 degrees apart. ये जहाँ ये great circle is cutting it, they are 180 degrees apart. Vertex is midway point. Midway point. यहाँ, this is a ये meridian है, ये meridian है, ये meridian है, ये meridian. Vertex, this is vertex, is midway point between these 2 points where the great circle cuts it.
Okay. Now pay attention. This is midway point. ये दोनों 180 डिग्री अपार्ट हैं, तो वर्टेक्स इस पॉइंट से कितना दूरी पे है? They are 180 degrees apart. These 2 points, A, B, they are 180 degrees apart. Vertex is midway point between the 2 points where the grid circle intersects the equator. Okay. तो vertex कितने डिग्री पे होगा? From this point, these points. Midway. 90 degree. So vertex is the point where the grid circle intersects the equator is 90 degrees apart. Okay. What we said, the angle which the grid circle subtends with the equator. This is the grid circle. This is the angle which subtends with the will be the latitude of the vertex. Will be the latitude of the this latitude of the vertex is equal to angle at which grid circle intersects the equator. जैसे हम बताए, ecliptic intersects the equinoctial. Now, there too, there on celestial sphere, these are two grid circles, equinoctial and ecliptic. कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे. मैक्सिमम डेक्लिनेशन रीच वर्टेक्स पे जब वो सन पहुंचता है ग्रेड सर्कल, तो कितना है? 23.5 डिग्री. लाइकवाइज सपोज ये 30 डिग्री पे कट कर रहा है, 30 डिग्री पे ये कट कर रहा है 30 डिग्री, लैटिट्यूड विल बी 30 डिग्री. यदि 40 डिग्री पे कट, 40 डिग्री द लैटिट्यूड. ओके, इजंट इट? ये बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आई कि नहीं? दिस यू अंडरस्टूड और नॉट? जवाब दीजिए. यस सर. ओके. नाउ एंगल, द एंगल which it is making, ये आपका अर्थ है. ओके ओके, ये ग्रेड सर्कल मान लीजिए. तो दिस इज द एंगल इट इज मेकिंग, द ग्रेड सर्कल इज मेकिंग, दिस इज द ग्रेड सर्कल मेकिंग, एंड दैट विल द लैटिट्यूड ऑफ वर्टेक्स. ये वर्टेक्स है, द हाईएस्ट पॉइंट वेयर द ग्रेड सर्कल विल रीच. नाउ दिस कोर्स विल, मान लो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है. व्हाट इज दिस कोर्स शिप विल मेक? कितना? 60 डिग्री. भाई ये 30 डिग्री है, तो ये मेरिडियन से ये यहाँ तक कितना हुआ? 90 डिग्री. तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री. सो दिस कोलैट इज दिस कोलैट ऑफ वर्टेक्स. दिस इज कोलैट ऑफ वर्टेक्स. कोलैट इज 90 माइनस लैटिट्यूड इज कोलैट. ईवी विल बी हाउ मच? कितना होना चाहिए? ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री. तो जो भी कोर्स एट द इक्विनॉक्स, नॉट नोवेयर एल्स, और कहीं नहीं, at the equator, whatever course you are making, that will be colet of the vertex. Okay, the angle at which the equator, at the which grid circle cuts the equator, will be the latitude of the vertex. This we will discuss separately later on when you are doing vertex. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Is that clear? Is that clear? Yes sir. Okay. Now remember, as I said, the course हमने क्या बोला कि equator से that is the maximum course. For that grid circle, this is the maximum course achieved. 60 degree, 59, this is 60, 61, 62. Sorry, maximum north south component का होगा. उसके बाद क्या होगा? Maximum north south component when the grid circle intersect the equator. Now as it progresses northwise or southwise, जैसे भी होगा, ये 61 होगा, 62 होगा, 63 होगा, 64 and so on till it comes to the vertex where the course will be east-west. North-south component decreases as the latitude increases on the course till you reach the vertex, when again the course becomes east-west. At the vertex, course becomes east-west. Again, as you progress further, the north-south component will start increasing and will reach, when you cut the point at the equator at the second point, will have the same course. ठीक है? You understood? Course increases. Course increases. In other words, the north-south component of a course decreases and east-west component increases as the ship progresses and as the great circle progresses
till it reaches the vertex. When the north-south component becomes 0 and the course becomes east-west. किसी भी ग्रेड सर्कल, ठीक है? Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, coming back to the हम जब किसी दो पॉइंट का ग्रेड सर्कल ट्रैक मालूम करते हैं, ग्रेड सर्कल ट्रैक ग्रेड सर्कल किसी दो पॉइंट में मालूम करना है हमको, व्हाट वी डू, लेट मी डू जो भी दो पोजीशंस हैं. ओके, फर्स्ट राइट डाउन द अराइवल एंड डिपार्चर पोजीशन. ठीक है, फाइंड डी लैट एंड डी लॉन्ग. ठीक है, तो बिटवीन द टू पोजीशन, उन दोनों पोजीशन में डी लैट एंड डी लॉन्ग मालूम कर ली. जो डिपार्चर पोजीशन है, जो अराइवल पोजीशन, उसको पहले लिखिए. यू विल राइट डाउन फर्स्ट द डिपार्चर पोजीशन, देन अराइवल पोजीशन. फाइंड द डी लैट एंड डी लॉन्ग. दिस विल गिव यू एन आइडिया as to how the grade circle is progressing. This is important to find the D let and क्योंकि लोग इसी में गलती करते हैं. So when you are finding the distance in two places, okay, now you draw the earth and lay down the position as shown in. I'll show you how. Okay, now we require pole. Just to understand, we require pole. This is okay. Suppose this is a ग्रेड सर्कल. अब ये हमारा इक्वेटर है. मान लो दिस इज योर ए इज अराइवल एंड बी इज डिपार्चर पोजीशन. तो पहले हमने डी लेट एंड डी लॉन्ग बनाया. मान लो ए इज 20 डिग्री नॉर्थ, बी इज 40 डिग्री नॉर्थ. ओके, डी लॉन्ग इज से 60 डिग्रीज ईस्ट. वी फाउंड दिस, वी नो हाउ टू ड्रॉ इट. ये हम ड्रॉ किया 60 डिग्री, ये डी लॉन्ग अप्रॉक्सीमेट ले लिया, and ये B draw कर लिया 40 degree light. Okay, this is how. Now we have to choose a pole because, as I said, in spherical triangle we require 3 sides and 3 angles. 3 sides are the angle at the center of the sphere. The sides are the angular measurement between 2 points, like A B का जो measurement है A B का is the angle at the center of the earth contained between A and B. तो ये तीनों साइड दी हुई है आपको, ये 3 एंगल, दे आर 6 एलिमेंट्स. तो पहली चीज व्हाट, राइट डाउन द डिपार्चर पोजीशन, अराइवल पोजीशन एंड फाइंड द डी लेट एंड डी लॉन्ग. दैट विल गिव एन आइडिया एज टू हाउ द ग्रेड सर्कल इज प्रोग्रेसिंग, हाउ इज टू बी ड्रॉ. मान लो यहाँ लैटिट्यूड ए इज 20 डिग्री नॉर्थ, बी इज 40 डिग्री नॉर्थ, तो यू नो ना ये नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा. डी लॉन्ग इज 60 डिग्री, तो मन को ए को वेस्ट में ड्रॉ करेंगे और बी को ईस्ट में ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री. ओके, नाउ वी हैव टू चूज अ पोल. You have to choose a pole. When the both arrival and departure positions are in the same hemisphere, you will choose the same pole. In this case, A is north, B is also north, so we will take the north pole. If suppose A was south, B was also south, then we will take the south pole. It doesn't mean that कि आप उससे कैलकुलेशन करेंगे साउथ पोल से नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा. But for convenient we take the pole between A and B. मान लो हमको लेना है पॉइंट, तो हम तो नियरेस्ट पोल लेंगे. पोल if you are in the same hemisphere, we will take the same pole of that hemisphere. Okay, now suppose, okay, now one thing, remember, whenever you are drawing a course, draw the ship just like this. मान लो this is your A is the departure position, B is arrival. Draw the ship like this. Draw the ship like this. ऐसे एक चार्ट बनाई. So you have an idea as to how the course is. क्योंकि हम we are going to solve PBA. We are going to solve this triangle, so we will solve angle A, angle B. But what is the course? This is the course. Now remember, pay attention. We are going to solve PAB, to angle A we are going to solve, okay, for finding initial course. But what is your course? You measure from the meridian. मान लो your angle A comes to 60 degree, so what will be course?
What will be a cos? बताइए. Angle A comes 1. What will be cos? 360 minus. 360 minus. Okay. Now angle B is you have calculate किया आपने 45 degree. So what will be a cos? Same. नहीं, कैसे 45 ये है. No sir. कितना आएगा बताइए. You are calculating this B, angle B. 180 plus 180 180 plus. plus 45. Because remember vertically opposite angle are equal. तो जो एंगल ये है जहां मैंने कर्सर रखा है वही एंगल आपका ये वाला नीचे वाला है. दिस पार्ट दे आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो 180 plus 45 कितना हो 225. So this is very important. Whenever you are drawing, first you write down latitude, longitude of both the position, find the D-lat and D-long. So we will draw the figure like this, and then we will know how we are going to calculate this. Okay, because this is important. Again, let's take another here. A, B. Now what is A is the departure position, B is the arrival position. Okay. Now which pole you will take? You will take when there are the position in different hemisphere. There are two positions in different hemisphere. You will take the pole of the higher latitude. एक साउथ में है ये, बी नॉर्थ में. तो बी इज हायर लैटिट्यूड, तो हम बी वाला. भाई ये नहीं कि आप नॉर्थ ये दूसरा वाला लेंगे तो कैलकुलेशन नहीं आएगा. बाई कन्वेंशन वी टेक दैट द पोल ऑफ हायर लैटिट्यूड. नाउ यहाँ कोर्स क्या होगा? यू विल कैलकुलेट दिस एंगल. देखो हम पीएबी कैलकुलेट हमने फार्मूला किया कि हमको 3 साइड मिली, तो हम कोई भी एंगल कैलकुलेट कर सकते. ये 2 साइड इंक्लूडेड एंगल है, तो हम उसकी अपोजिट साइड एंगल के अपोजिट साइड कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो हम एंगल ए कैलकुलेट. व्हाट इज योर कोर्स? योर कोर्स इज दिस वन. इन दिस केस ऑफ कोर्स यू विल सी एज टू हाउ. दैट्स व्हाई ड्रॉ द शेप हियर, उससे आपको आइडिया है. ओके, यू कम टू बी. This angle B you will calculate. AB you will calculate angle B. But what is your course? Your course is this. Your course is this. Is that clear? But this is important. First thing, write down the arrival position, departure position. Write down the arrival position. Find the D-lat and find the D-long. Of course, we have to solve the triangle. तो हमको चाहिए 3 साइड पी बी, जो भी 3 साइड 2 साइड एंगल. तो मान लो यहाँ पी ए हमको मालूम पड़ता, हमको पी ए मालूम होना चाहिए. नाउ इन दिस केस पी ए विल बी 90 प्लस दिस लैटिट्यूड, पी बी विल बी 90 माइनस द लैटिट्यूड. ओके, एंगल पी इज द डी लॉन्ग बिटवीन दैट. ये समझ में आ रहा है ना? डू यू एग्री और नॉट? यस सर. साइड्स मालूम पड़ जाएगी तो, एंड देन वी कैन सॉल्व द ट्रायंगल. ओके, लेट्स टेक ए थर्ड केस. मान लो ए है, दिस इज बी. ए इज दोनों डिफरेंट हेमिस्फीयर में. द वन विच वी विल टेक द पोल ऑफ द लैटिट्यूड इज हायर. इन दिस केस बी इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड वैल्यू इज मोर देन द ए, so we will take the pole of the southern hemisphere. South pole will take. Okay, this is your course. Now this is the grid circle you are drawing. Now आप एंगल PAB में कौन सा ये एंगल कैलकुलेट, लेकिन आपका कोर्स क्या होगा? ये. ओके, एंगल बी में आप ये कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपका कोर्स क्या होगा? ये होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ लोग गलती कर देते हैं. वी आर सॉल्विंग PAB, वी विल कैलकुलेट दिस एंगल ए, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है कोर्स. कोर्स विल बी हाउ मच? वी नो 180 प्लस दैट वैल्यू व्हाट विल गिव द कोर्स. इन दिस केस दिस इज बी, तो हमारा एंगल बी क्या कोर्स क्या ये है, तो क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका जो ये एंगल है वही ये एंगल है. ओके, सो व्हाट हैपेंड, कितना हुआ? 360 माइनस कर दे, या आप एज यू डीम फिट. यहाँ ये इसका ये टोटल इसका है, ये एंगल कैलकुलेट ये जोड़ दीजिए इसमें, ये वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ दीजिए 180 में, तो भी आ जाए. और सिंपली आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हमको ये एंगल बी बाहर वाला मिल गया एक्सटीरियर, वी विल सबट्रैक्ट फ्रॉम 360 टू गेट द कोर्स. ओके, तो फर्स्ट थिंग वी विल राइट द position, find the D-lat and D-long, and also PA and PB, because to solve a spherical triangle
we require either 3 sides or 2 sides or included angle. Normal spherical triangle. I'm not talking about the right angle spherical triangle or quadrilateral spherical triangle. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. Now write down this question, then we'll come to the board. एक एक करके कराएंगे, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर है. Find the great circle distance, initial and final courses from A 6 degrees north, 79 degrees west, and to B 38 degrees south and 179 east. लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिख लिया? Then I can come to the board. एक मिनट. Oh yes, sir. Thank you, sir. Okay, now let me close this. Okay, आप ऐसे लिखिए, ठीक है. फर्स्ट थिंग, एक और चीज, पीए एंड पीबी भी लिख लीजिए. नाउ पीए पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, देन विल राइट पीए एंड पीबी. पीए एंड पीबी ऐसे साइड में लिख लीजिए. ओके, पहली चीज व्हाट आई सेड, दिस इज योर डिपार्चर पोजीशन, दिस इज योर अराइवल पोजीशन. व्हाट डिड आई से? फर्स्ट राइट द डी लैट एंड डी लॉन्ग. व्हाट इज द डी लैट? बताइए, इसका डी लैट कितना है? 44 साउथ. 44 डिग्रीज 00.0 मिनट्स. ओके, डी लॉन्ग निकालिए, वेरी इंपॉर्टेंट. सर 102 वेस्ट. वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, दोनों को जोड़िए. मोर देन 180, सबट्रैक्ट फ्रॉम 360 एंड चेंज द साइन. तो कितना हुआ? सर 102 सर वेस्ट. 102 डिग्री वेस्ट. 79 डिग्रीज प्लस 179 डिग्री इज इक्वल टू 4 मच, इसमें माइनस प्लस 360. और क्या होगा? 102 वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट. वेस्ट 102 डिग्री. ओके, ओके, ठीक है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट डिड इट से? पहले ड्रॉ द अर्थ. दिखाई दे रहा है फिगर? ओके, इक्वेटर ड्रॉ की. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. डिपार्चर पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, अराइवल पोजीशन सदर्न हेमिस्फीयर. व्हिच पोल विल यू टेक? व्हिच वन इज हायर? व्हिच वन इज हायर? साउथ. तो हम साउथ पोल लेंगे, साउथ पोल. ओके, पोल लेंगे, वेरी गुड. डी लॉन्ग कितना है? 102. तो ईस्ट किधर? ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है. तो यू विल ड्रॉ द फर्स्ट पोजीशन, ये जो 179 डिग्री, बिकॉज डी लॉन्ग इज 102 डिग्रीज वेस्ट. तो फर्स्ट पोजीशन विल बी ड्रॉन इन द ईस्ट. तो आप यहाँ 60 डिग्री, दिस इज ए. ओके, तो ये आपका ये लिया जाएगा. ओके,
बी 102 डिग्रीज, 102 डिग्री कहीं यहाँ 38 डिग्री है, कहीं 38 डिग्री। तो ये आपका कोस ए। रिमेंबर यहाँ बहुत गड़बड़ी लोग करते हैं, दे मेक मिस्टेक हियर। तो ऑलवेज ड्रॉ द फिगर, यू सी द लेफ्ट। आपका शिप ऐसे चलेगा यहाँ से। ओके, नाउ वी पी इज इक्वल टू हाउ मच, पी इज इक्वल टू हाउ मच बताइए सर डी लॉन्ग A की वैल्यू कितनी है? 102। डी लॉन्ग ये है 10। पी ए की बात, पी ए, दिस पी ए, दिस 90 plus 6 degree. 90 plus 6 डिग्री, 96 डिग्री। 90 plus 6 डिग्री, व्हाट इज पी ए इक्वल टू? आपके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। 6 डिग्री नॉट लैटिट्यूड, आप साउथ पोल ले रहे हो, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी? क्या हो गया? नहीं समझ में आया? सर 96 डिग्री। 96 बोलिए ना, 96 डिग्री। ओके, 96। पीबी की वैल्यू क्या होगी? पीबी, व्हाट इज द पीबी वैल्यू? 90, ये आपका मरीडियन है, ये यहां से जा रहा है ऐसे। ओके, ये कितना है? 38 डिग्री। तो पीबी कितना हुआ? 90 माइनस सर कितना हुआ? सर 90 माइनस 52। कितना हुआ? 30 52 सर। 42, ये हुआ ना? 42 ये हुआ ना? सर 42 52 सर 42 को। 52 ओके, 0 मिनट 0 ओके। क्वेश्चन से फाइंड द इनिशियल फोर्स, फाइनल फोर्स and the GC distance. Okay, we know PA, we know PB. What is angle P equal to? D long. What is angle P equal to? D long कितना सर है? 102 सर। 10। ओके, हमको डिस्टेंस क्या है? AP. This is the opposite side of the P, angle P. We have two sides, A and included angle. Can we not find the distance AB? भाई formula क्या है? You want to find the side, you have given two sides and included angle. We can use the 4 cosine formula. Cos of as any side is equal to cos of opposite angle into product of sine of adjacent side of that angle into sine of adjacent side of that angle plus cos of adjacent side into cos of adjacent. यही है ना फॉर्मूला? सर ये पीए फिर से बता दिए। कैसे? सर ये ए पोजीशन जो बनाई है सर वो बता दी फिर से। बोलिए। एंगल सर ए पोजीशन। आप यस सर। लैटिट्यूड क्या है आपका? लैटिट्यूड क्या है का? सर 6 डिग्री नॉर्थ। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ये हम अब कैसे इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ, लेकिन हमको देखना है डी लॉन्ग क्या है। दूसरी पोजीशन क्या? 38 डिग्री साउथ, वो समझ लिया। हाँ, ओके, व्हाट इज द डी लॉन्ग? 102 वेस्ट, 102 वेस्ट। तो पहली पोजीशन किधर आएगी? पहली पोजीशन किधर आएगी? ईस्ट में या वेस्ट में? भाई डी लॉन्ग वेस्ट है, तो पहली दूसरी पोजीशन क्या है कि पहले ईस्ट और वेस्ट में होगी? सर वेस्ट है पहले तो। पहली पोजीशन ईस्ट में होगी या वेस्ट में होगी? आपका डी लॉन्ग वेस्ट है, मतलब कि सेकंड पोजीशन लाइज 102 डिग्री
डी लॉन्ग वेस्ट ऑफ 102 डिग्री वेस्ट ऑफ ए। तो पहली पोजीशन कहाँ ड्रॉ करोगे? ए कहाँ ड्रॉ करोगे? इस अर्थ में कहाँ ड्रॉ करोगे? 6 डिग्री नॉर्थ का हमको मालूम है, कहाँ ड्रॉ करेंगे? यहाँ ये है इसका पैरेलल लैटिट्यूड, लेकिन उसको कहाँ ड्रॉ करेंगे भाई? एक ईस्ट में ड्रॉ करेंगे कि नहीं? यदि बी लाइज वेस्ट तो ए को ईस्ट में ड्रॉ करोगे कि नहीं आप? बी लाइज, बट सर ऐसे पोजीशन तो पहली पोजीशन कहाँ? हाँ सर ईस्ट में। बोलिए ईस्ट में ना, तो ऊंची लिया हमने। अब जैसे जैसे क्वेश्चन को अपने आप आ गया, तो हमने ये वहां ड्रॉ कर लिया, उसको 102 डिग्री हमने मेजर किया, उसका लैटिट्यूड 38 डिग्री साउथ, तो ये 10 20 30 और 38 डिग्री साउथ अप्रॉक्सिमेटली। तो आपका कोर्स ऐसा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ लोग गलती कर देते हैं, दिस इज वेयर यू मेक अ मिस्टेक। लैटिट्यूड आपने डिलेट लिया, ओके, हमने अकॉर्डिंगली पोजीशन कर दिया। एंगल पी मालूम है हमको पी ए मालूम है, पी ए हमने निकाला, पी बी। कौन सा पोल लेंगे? जो हायर लाइट, व्हाट डिड आई से? इफ दे आर बोथ द पोजीशन लाई इन द सेम हेमिस्फीयर, आप वही पोल लोगे। इफ दे लाई इन अ डिफरेंट हेमिस्फीयर, यू विल टेक द पोल व्हिच हैज अ हायर लैटिट्यूड, वो वाला पोल। इन दिस केस साउथ। ओके, इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ओके, अब निकालिए कॉज ऑफ ए बी। लिखिए कॉज ऑफ ए बी इज इक्वल टू कॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल कॉज ऑफ पी इनटू साइन ऑफ एडजेसेंट साइड, लिखिए साइन ऑफ पी ए इनटू साइन ऑफ पी बी प्लस कॉज ऑफ पी ए इनटू कॉज ऑफ पी बी। निकालिए। So 103.2. तो ये कितना है? कॉज ऑफ पी इज हाउ मच? 102 डिग्री। 102 डिग्री ना? So 103.2. क्या आपका पी भी आ रहा है? तो पहले मुझे कर लीजिए इनटू साइन ऑफ पी ए। साइन ऑफ पी ए कीजिएगा 96 डिग्री इनटू साइन ऑफ पी बी। साइन ऑफ पी बी कितना है? 52 डिग्री प्लस कॉज ऑफ पी ए, कॉज ऑफ 96 डिग्री इनटू कॉज ऑफ पी बी। देख लीजिए गलती तो कहीं नहीं किया हमने। और साइन, ये भी साइन है ना, ओके, इज इक्वल टू सो मच शिफ्ट कॉस कितना? 103 डिग्रीज 8.2। हमारे ए बी आया 103 डिग्रीज 8.2। नाउ वी वांट डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय 60। मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्रीज है, मल्टीप्लाई बाय 60 6188.26। ये आपका ग्रेट सर्किल डिस्टेंस हो ए बी। दिस इज योर ग्रेट सर्किल डिस्टेंस ए बी। ओके, अब हमको एंगल कोर्स, इनिशियल कोर्स। तो इनिशियल कोर्स क्या होगा? हमारा कोर्स ये होगा, ये हमने जो बनाया है, ये मेरिडियन है, ये आपका कोर्स। ओके, तो कोर्स पहले एंगल ए मालूम करें तो हमको कोर्स मिल जाएगा। तो आपका कोर्स क्या है? ये एंगल बी मालूम करेंगे, आपका कोर्स क्या है? ये। तो एंगल ए मालूम कीजिए, ये सबने किया है, साइड ए बी निकाल दिया। इस पे हम 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे अभी, टिल यू हैव गॉट अ ग्रास्प ऑफ इट। ओके, पहले एंगल ए, ये तो सबने कर लिया, साइड ए बी। नाउ लेट अस फाइंड एंगल ए। एंगल ए बताइए फार्मूला। हमने क्या बोला है? हम सॉरी 103 पॉइंट कितना था? 103 डिग्री 8.2 मिनट था ना। हाँ, ए बी की जरूरत पड़ेगी, क्यों ए बी की जरूरत चाहिए? एंगल कैसे मालूम पड़ेगी? ए बी इज इक्वल टू 103 डिग्रीज 8.2, ये है। ओके, उसका जो भी डिस्टेंस आया मल्टीप्लाइड बाई 60। नाउ
हमको एंगल ए सॉल्व करना है। एक बार मैं फिर से मिटा के बनाता हूँ सो दैट कंफ्यूजन। फिगर हमेशा रहनी चाहिए। ये अर्थ है, ओके, ये इक्वेटर बनाइए, ए यहाँ आएगा, ए ये बी, ये आपका कोर्स है, ये ए है, ये बी है, ये आपका मरीडियन कोर्स। जैसे ये मैं खाली आपको दिया, हमको ये भी मालूम, एंगल मालूम कर लें तो हमको मालूम पड़ जाएगा तो शिप इज गोइंग दिस वे। तो एंगल ए मालूम पड़ेगा, व्हाट इज एंगल ए, वी नो। हमने क्या बोलता है, एनी एंगल कैन बी फाउंड आउट इफ वी नो द थ्री साइड। तो हमको ये मालूम है, पी भी मालूम है, एंड ए भी मालूम है। वी नो कॉज ऑफ एनी एंगल, कॉज ऑफ एनी एंगल या कॉज ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू व्हाट, बताइए, कॉज ऑफ ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है? सर पीबी माइनस प्रोडक्ट Cos ऑफ of- कोसाइन ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ दैट एंगल, ऑफ दैट एंगल। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सी है? सर cos of AB into cos of PA। एक मिनट, होल्ड ऑन। एंगल पी तो सर अपने को पता है ना, एंगल पी का निकालेंगे, एंगल एंगल ए पी का एंड मैं एंगल बी निकल। हाँ तो ओके, हम एंगल ए चाहिए, एंगल ए कैसे मालूम करेंगे, कॉज ऑफ एंगल ए साइन फॉर्मूले से कर सकते अब बताइए, कॉज ऑफ अपोजिट साइड, तो कॉज ऑफ क्या है, पीबी माइनस प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ एडजेसेंट ऑफ पीए इनटू कॉज ऑफ एबी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एडजेसेंट साइड, साइन ऑफ पीए इनटू साइन ऑफ एबी। यही ना, हमको एंगल ए लेना है, एंगल ए लेना है, तो एंगल ए लेना है तो क्या करें, कॉज ऑफ ऑपोजिट साइड, फार्मूला क्या है, कॉज ऑफ एनी एंगल कॉज ऑफ ऑपोजिट साइड माइनस प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ एडजेसेंट साइड, तो कॉज ऑफ पीबी माइनस कॉज ऑफ पीए इनटू कॉज ऑफ पीबी, तब कॉज ऑफ एबी डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एडजेसेंट साइड, तो साइन ऑफ पीए इनटू साइन ऑफ ए। वैल्यूज डालिए, कॉज ऑफ पीबी हमको मालूम है, सर साइन फॉर्मूले से नहीं कर सकते? कॉज ऑफ 52 डिग्रीज माइनस कॉज ऑफ पीए कितना है, 96 थोड़ा डिग्रीज तेज। into cos of AB है 103 degrees 8.2 minutes equal so much divide by sin of PA, PA कितना है, sin of PA is 96 degree into sin of AB 103 degrees 8.2 shift cos, okay, 54.57. Now remember that is not a course. We have got angle A is equal to 54 degrees और कितना मिनट, 34.7 minutes. That is this angle, angle A. कोस क्या होगा बताइए, कोस ये निकालिए, कोस क्या बताइए, क्या होगा कोस, सर 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री 34.7। 180 डिग्री प्लस 54 तो कितना हुआ, 224 डिग्रीज, सॉरी कितना हुआ, 234। Is that clear? Is that clear? हाँ जी सर। Okay. Or you can write सर that इसको साइन south फॉर्मूले 50, से कर south सकते हैं ना? 54 डिग्री 34.7 west, ऐसे भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेटर फॉर्म में। सर हाँ जी तो साइन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना? बोलिए, सर इसको साइन फॉर्मूले क्या से हुआ, भी कर साइन? सकते हैं ना? साइन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना, मैंने कहा। अब देखो साइन फार्मूले से हमको ये एंगल ये साइड मालूम है, ओके, ये एंगल और ये साइड मिला, आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन फार्मूले से। आपको एबीसी से बताऊंगा कैसे किया जाता है, आप करके देख लो, लेट्स हैव अ लुक, गुड। आप लोगों का दिमाग चल रहा है मतलब बुक में। तो नाउ लेट्स सी साइन पी की, साइन पी कितना है, साइन पी इज 102, साइन ऑफ 102 डिग्रीज डिवाइड बाय साइड कितनी है, उसकी अपोजिट साइड
साइन ऑफ 103 डिग्री 8.2 मिनट्स। साइन ऑफ 103 डिग्रीज 8.2 मिनट। ठीक है, ये हो गया। मल्टीप्लाइड बाय, हमको कौन सी साइड पी भी चाहिए, ऑपोजिट साइड ए मालूम करनी है, तो इज इक्वल सो मच मल्टीप्लाइड बाय कितना है, साइन ऑफ पी भी कितना है, साइन ऑफ 52 शिफ्ट साइन। कहीं गड़बड़ किया है, कहीं गड़बड़ को देखो, फिर से देखो, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेट्स सी फार्मूला, साइन ऑफ P upon sine of AB is equal to sine of A upon sine of PB। ओके, करिए, साइन ऑफ P कितना है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, कहीं गड़बड़ हुआ। साइन ऑफ P कितना हुआ 102 डिग्री, साइन ऑफ 102 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ AB कितना हुआ, साइन ऑफ AB 103 डिग्री 8.2, साइन ऑफ 103 degrees 8.2 minutes। ओके, मल्टीप्लाइड बाय पीबी कितने के बराबर है, 52 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री शिफ्ट साइन 52 डिग्री 19.34। कहीं गड़बड़ी हो रहा है, या तो इसमें गड़बड़ी है, देखिए पीबी में बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जिस एंगल मालूम है तो ये दोनों भी आने चाहिए। फिर से चेक करो, साइन ऑफ पीबी कितना है, साइन ऑफ पीबी 52 डिग्रीज साइन 52 माइनस साइन ऑफ पीए कितना है 96 इंटू साइन ऑफ AB 103 degrees is equal to divided by cos of कितना है, cos of PA कितना है, नहीं, cos of 96 डिवाइड बाय cos of ये AB कितना है 103 degrees कहीं गड़बड़ी मैंने किया है, फिर cos of PB is equal to cos of 52 degrees minus cos of PA is equal to cos of 96 degree into cos of AB, cos of 103 degrees into 23 degrees 8.2 divided by sine of PA 96 divided by sine of AB 103 degrees हाँ 52 डिग्री 19 सर ये सही। पहले जो ये निकाला ये गलत निकाला है कॉस वाला। 52 डिग्री 19 पॉइंट कोई वैल्यू आएगी, आप क्या साइन से भी कर सकते हो, आप निकाल दिए यस पर टू राइट डाउन, उसको वैल्यू निकाल दो, बट वी प्रेफर कि आप ऐसे लिखिए। तो हर चीज हर स्टेप को लिखिए, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग डूइंग दिस क्वेश्चन, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमारा एंगल क्या हो गया, आप देख लीजिए एंगल, उसको क्या हो गया आपका 232 डिग्रीज 19.6। मैंने आंसर देखें इसमें होगा तो चेक कर लेते हैं, लेट मी सी इफ वी हैव आंसर। किया है ना, सॉल्व किया है, हाँ 232 19.6 पहले गलत कैलकुलेट करते हैं। ऑलवेज बी केयरफुल, डबल चेक कर लो, देखिए नोबडी इज इनफेलिबल, ये गलतियां हो जाती हैं, तो रिमेंबर उसको चेक करके डबल चेक करें। आपने जैसे भी कैलकुलेट किया
एक वो जो साइन फार्मूला चेक कर लिया, आपको मालूम पड़ जाए सही है कि नहीं, है कि नहीं? यू अंडरस्टूड? आपने ये फार्मूला लिख के कर लिया, साइन फार्मूला चेक कर लिया, आपको 2 मिनट में होगा, साइन फार्मूला से हो जाएगा। ओके, वी स्टॉप हियर। फाइनल कोर्स बाद में करेंगे, फाइनल कोर्स में करूंगा, आप करके लाइए फिर देखते हैं फाइनल कोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड देयर विल डू मेनी प्रॉब्लम वेरियस, उसमें से एमएमडी के क्वेश्चंस करेंगे। आपको सिंपल है, ऑन द ओनली थिंग वो सिंपल प्रोसीजर्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो। लिख लीजिए जैसे मैंने बताया, पहले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एंड देन सी व्हाट इज डी लेट एंड डी लॉन्ग अकॉर्डिंगली प्लॉट। लोग गलत प्लॉट करके भी गलत आंसर देते हैं, सब कुछ फार्मूला आते हुए भी सब कुछ हो फिर गलती हो जाती है। तो ऑलवेज ड्रॉ फिगर ड्रॉ करो, आपके लिए फिगर वो ड्रॉ करके देखो कैसे कोर्स, और वहाँ एक शिप बना तो कोई गलती नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एवरीबॉडी हैप्पी? नहीं सर, यस सर, हैप्पी सर। ओके, ठीक है। नोट्स मैं भेज दूंगा ग्रेड सर्कल नोट्स भेज दूंगा। आप लोगों को पहले न्यूमेरिकल्स कई कराने हैं, वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, बट बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि वर्टेक्स क्या है, ये क्या है, वो सब वर्टेक्स में बाद पहले यहाँ मास्टरी कर लेंगे हम, इनिशियल कोर्स, फाइनल कोर्स, इसको हम दूसरे भी ले लें, ABCFC से भी करके देखेंगे। ABC से कोई आप कर सकते हो, ABC जो हम लोग एजिमत लेते हैं वैसे भी कर सकते हैं, वो भी फार्मूला लगा करेंगे। अब वो भी जो भी मेथड हो, ईच स्टेप शुड बी रेड, डायरेक्टली मत लीजिए कोर्स ये है, यू फार्मूला शो दैट दिस इज द फार्मूला वी यूज एंड दिस इज द वैल्यू। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.